Good morning, students. Welcome back to the lecture 8. The today's topic is electric flux, and the chapter is electric charges and field. So, as you can see on this board, that I have written 4 bullet points with regards to this topic. In the first topic, I have tried to define the what electric flux is, and thereafter we will be going through the other important bullet points. So the definition of the electric flux is that it is a measure of electric field through a given surface, and the density of the field lines correspond to the field strength. The field strength is more near the charge, and as we go away from the charge, the field strength reduces. Okay. So the number of field lines per unit area is called the electric flux density. Number of field lines per unit area is called the electric flux density. What is flux? Flux is a measure of electric field through a given surface. The second point is electric flux is proportional to the number of field lines passing through a surface. Now means कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस एक सरफेस के थ्रू पास होंगी तो फ्लक्स जो है उतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, ये लाइन बहुत ही सिंपल है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Second thing है, if the electric field is uniform, then the electric flux through a surface of area S is given by, that is, flux is equal to Es cos theta, where E is the magnitude of the electric field, or you can say it is the intensity of electric field, and S is the surface area, and theta जो है that is the angle between the direction of the electric field and the normal to the surface. ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक आपका सरफेस है, लेट अस से ऐसा है, दिस इज अ सरफेस. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट हियर लाइक दिस. अभी मान लो ये आपका the electric field lines are directed in this direction, let us say. Okay. Now, if this ABCD, I am just designating this surface by ABCD. Now, if this surface is inclined to this electric field, then the normal, let's say the normal to this surface is like this, for example. Okay. ठीक है, let's say the normal to this surface is like this, though the angle made by this electric field and the normal to the surface, that is, this is the angle theta. ठीक है, और अगर मान लीजिए ये surface है, ये आपका electric field सीधे ऐसे पास हो रही है, so the normal to this surface क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, so it is parallel to E. So the angle made by the direction of the this electric field E and the normal to the surface is 0. यहाँ पे आपका जो है थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 0. So so this is how we calculate the value of theta, and here if the electric field is uniform, then we use this formula, that is flux is equal to Es cos theta, where theta is the angle between the direction of V and the normal to the surface. And if the electric field is not uniform, then the flux over a surface is given by the surface integral, which is written here, that is surface integral, where that is E ds, where ds is the differential area of the surface S. ds is the differential area of the surface S, and this formula we use it when the electric field is not uniform. When the electric field is uniform, we use this formula. Okay. Now there are a few more important points regarding this electric flux, so I will be just mentioning it here again.
Yes, the next important point is that if the electric field is uh, directed outward from a surface, then the flux is considered positive. Or if the electric field is directed outward from a surface, then the flux is considered positive. And if it is directed inwards, then the flux is नेगेटिव. ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा सा एक क्यूब बना देता हूं. ये क्यूब है. ठीक है. सो इफ फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इट इज पासिंग थ्रू दिस क्यूब इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है. ये एक क्यूब का सरफेस है, ये क्यूब का सरफेस है. अभी अगर इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हियर आप देखेंगे कि इस सरफेस में these field lines are directed inward, that is it is going into the surface, this surface, let us this one here, this surface. तो यहाँ पर जो है जो field lines हैं they are directed inward or it is going into the surface, so the flux through this area will be taken as negative. Whereas in this case ये वाला surface है, this one, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी फील्ड लाइंस हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस, दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस सरफेस. ठीक है, दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम दिस सरफेस, सो द फ्लक्स विच विल बी एसोसिएटेड विद दिस सरफेस विल बी पॉजिटिव. ठीक है. तो दिस इज व्हाट दिस डेफिनेशन मीन्स. Now this next important thing which I just want to tell you is about the Gauss law. इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक आता है Gauss law भी आता है. तो Gauss law ये कहता है कि that the total flux through a closed surface is given by Q divided by epsilon 0. Q जो है is the total charge enclosed by the surface. ठीक है. Where Q is the total charge enclosed by the surface and this epsilon 0, this naught is the permittivity of free space or vacuum. So the total charge Q is the total charge enclosed by the surface. The total flux is dependent only on the charge which is enclosed by the surface. The charge which are existing outside the surface means this flux is only
associated with the total charge which is enclosed in the surface, enclosed within the surface. जो चार्ज surface के बाहर है, that is not taken into consideration in the Gauss law. ठीक है. So the total flux through a closed surface is given by this Q upon epsilon 0, this epsilon naught, where Q is the total charge enclosed by the surface. And इसमें दो तीन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि पहला चीज़ है कि गॉस लॉ में कि फर्स्ट थिंग इज दैट द सरफेस शुड बी अ क्लोज्ड वन. द Q is the total charge which is enclosed by the surface. The charge which are not enclosed by the surface are not taken into consideration. Third point is that if the surface, if any surface, let's say this is the any surface, if it is it is lying in an I can say in a medium where there are charges inside the surface and there are charges outside the surface. So in that case, the flux will be dependent only on the charge which is enclosed by the surface. However, the electrical field, that is the total electrical field, will be due to the charges which are enclosed by the surface and also by the charges which are outside the surface. ठीक है. तो ये आपकी तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस लॉ में. अब इससे हमारा जो एक रिलेशन बन जाता है, एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि this this flux which is equal to Q by epsilon naught, this is will be equal to E S cos theta. ठीक है, ये आपका एक important relation है हमारे पास में. So we will be using this relation in order to find the flux as well as the intensity of electrical field. Now, when we use the Gauss law, we also, there is one term which is called Gaussian surface. Gaussian surface क्या होता है कि whenever we want to find the intensity of electrical field at any point from a closed surface, then we construct a Gaussian surface which encloses that point. दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कोई एक शेल है, ठीक है, और इसका लेट अस से इसके ऊपर एक द चार्ज इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द शेल. नाउ वी वांट टू फाइंड, लेट अस से इसका जो है आपका रेडियस कुछ भी है, लेट से r है. नाउ वी वांट टू फाइंड द दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट से यहाँ पे r है. तो हम क्या बनाते हैं कि वी जस्ट कंस्ट्रक्ट दिस गॉसियन सरफेस लाइक दिस वन. ठीक है, in order to find the intensity of electrical field at this point. Let us say this point is P and this is O. So this is this dotted line. It is indicating the Gaussian surface. ठीक है. So we will be discussing about this also through a few numericals, and so now I think this is whatever we have discussed here is sufficient, and the rest of the things can be discussed through while solving the numerical problems. Now so today we have in short, electric flux क्या है? Electric flux is basically, it is a measure of the electric field which is passing through a surface area, and the electric flux is the next important point is that the electric flux is defined by, or the value of the electric flux is given by the formula E is equal to Es cos theta, where S is the area of the surface, theta is the angle between the direction of the electric field and the normal to this surface, and this is also equal to Q upon epsilon naught, which is the Gauss law. So we have arrived at this equation, that is Q upon epsilon naught from the Gauss law. So E S cos theta is equal to
the flux is equal to Es cos theta is equal to Q upon epsilon naught. So this is an important relation. This is the second important point. Second thing, if the field is not uniform, then this flux is equal to the surface integral of E dot ds, where ds is the differential area. ठीक है, differential area on the surface S. And third, the electric flux is taken as positive if the these electric field lines are directed away from the surface, or you can say that they are directed outward, that is away from the surface or outward. ये आपका surface है, so if the field lines are directed outward from this surface, then the flux is taken as positive. And if the field lines are directed into the surface like this, ये आपका E है, these are the field lines and this is the surface, and if it is directed into the surface, then the flux is taken as negative. And in the Gauss law, we have just discussed that while calculating, Gauss law is basically used for finding the intensity of electric field due to any charged object. ठीक है, and let us say this is a spherical shell, जैसे अभी आपको मैंने बताया था. If you want to find the electrical field, let us say at a point P due to this charged spherical shell, then we construct a Gaussian surface which includes this point P like this. ठीक है, let us say ये आपका ये R हो गया है और ये let us say ये आपका R है. So using this Gaussian surface, we calculate the electric field at this point, and we will come to know about it, or we will learn about it through some numerical problems. And so let's start doing a couple of questions on this topic. So today in this session I will be taking very simple questions, because यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है. इट्स वेरी वेरी इजी. दैट देयर आर 3 चार्जेस enclosed in a surface. Question number 1. Enclosed in a surface. Having charge 6 coulomb, 5 coulomb and -3 coulomb. ठीक है. So find the total flux enclosed by the surface. Find the total flux ये निकालना है आपको. So we can use the Gauss law. It is very easy. That is the total flux जो है आपका, this is given by Q upon. ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नाउ द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 6 + 5 - 3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11 and -3 which is equal to 8 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, एंड एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू, ये होता है 8.854 into 10 raised to power -12. ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है.
दिस इज 8.854 इंटू इंटू 10⁻⁻12. ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है. सो यू कैन जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, दैट इज बाई, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाता है मेरा 8 divided by 8.8.854. So this is equal to 0.9 into 10 raised to the power -12. और इसको अगर हम -12 नहीं है, आपको +12 हो जाएगा. एंड दिस इज इक्वल टू, इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको कर देंगे 9/10, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10 to the power 11, and this is equal to Newton meter square और वोल्ट मीटर, ये भी होता है इसका. ये इसकी यूनिट हो जाती है. ठीक है. So this is how we calculate the, we have used this Gauss law in order to calculate the flux through this area. So let's move on to another question, which is again based on the Gauss law. And the question is, I have this question here right now. A hollow cylinder has a charge Q coulomb within it. This is the question number 2. A hollow cylinder has a charge Q within it. तो अगर हॉलो सिलेंडर है, ऐसा बना, ठीक है, इसको हम यहाँ ऐसा बना लेते हैं. ठीक है. A hollow cylinder has a charge Q coulomb, सॉरी ये Q आपका Q coulomb. ठीक है, कूलम को मैंने C लिख दिया है within it. And if phi is the electric flux in voltmeter associated with the curved surface, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये आपका कर्व्ड सरफेस B है, ये दिया हुआ है C, this is the curved surface C and this is the curved surface A. If phi is the electric flux associated with the curved surface B, ठीक है, इस जो ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये वाला, ये जो दिस वन, इसका इसके साथ में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो है आपका फाई, जिन्होंने दिया हुआ है, या द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन वोल्टमीटर. Flux associated with the surface curved surface B, this is given in voltmeter. यहाँ पे लिख देता हूँ in voltmeter. ठीक है, ऐसे करके. So flux through the surface A is, यहाँ पे इन्होंने 4 ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं. 1/2 ब्रैकेट में Q माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, 1/2 ब्रैकेट में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
5/3. This is the third alternative, and the fourth alternative is Q minus 5. ठीक है, ये है आपका. So here we have a hollow cylinder and it has a charge Q coulomb within it. If phi is in voltmeter is the electric flux which is associated with the curved surface B, then we have to find the flux through the surface A. ठीक है, and this is a hollow cylinder. So the area of this that is the area of this curved surface A and this C will be equal. So as per the Gauss law, the flux of this, the flux which is passing through this cylinder, let us say it can be a total flux. ठीक है, this will be equal to the flux through the surface A, flux through the surface B plus flux through the surface C. यही है ना. और अब हमारा जो a hollow cylinder has a charge Q within it. So the flux due to charge Q coulomb, वो कितना हो जाएगा? This will be equal to Q upon epsilon naught. मतलब एक यहाँ चार्ज अंदर यहाँ पे Q है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो जिसकी वैल्यू होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज पर द गॉस लॉ. ठीक है, तो सो दिस विल बी द टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हम यहाँ कहाँ लगाएंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे. अब ये इसका जब फ्लक्स which will be passing through this surface area A and that is through the surface area C. ठीक है, ये दोनों आपके बराबर होंगे. ठीक है, तो यहाँ जो फाई बी, दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस है, वो ये यहाँ पे दिया हुआ फाई है. सो हमें निकालना है दी फ्लक्स थ्रू दी सरफेस एरिया ए. तो अगर ये फाई ए हो गया प्लस ये आपका फाई हो जाएगा, एंड द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस सी को भी हम यहाँ पे फाई ए लिख सकते हैं, बिकॉज फाई ए विल बी इक्वल टू फाई सी. ठीक है ना, इनका जो एरिया है दोनों का सेम है. सो इफ द फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द एरिया ए इज फाई ए, सो द फ्लक्स विच विल बी पासिंग थ्रू द एरिया सी, इट विल बी आल्सो इक्वल टू फाई ए. तो अब हमारा आंसर क्या हो जाता है इसमें? ये हो गया, ये 2 फाई ए हो गया प्लस फाई इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें निकालना है फाई ए, तो हम क्या करेंगे, इसको फाई को इधर ले लेंगे. तो 2 फाई ए विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. यस, फाई. तो फाई ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 ब्रैकेट में Q माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. तो दिस इज दी flux associated with the surface A, and this will also be the flux which will be associated with the surface C, because phi A is, that is the flux associated with the surface A, is equal to the flux associated with the surface C. So the correct answer is this, and the alternative में हमारा ये हो गया 1, that is the alternative A is correct. ठीक है. I have right now I am just taking the very simple questions, because once you understand the concept of this topic, then and once you have solved some simple problems from this topic, then it will be easier for you to do some complicated questions also. So now let's move on to another question. Again, it is a very simple question. इसमें लिखा हुआ है, a charge Q is located at the center of a cube.
Q is located at the center of a cube. ठीक है, at the center of a cube, the electric flux through any phase, the electric flux through any phase is, there are four options: pi q divided by 6 4 pi epsilon naught, pi q divided by 6 4 pi epsilon naught, b q divided by 6 c 2 pi q divided by 6 4 pi epsilon naught, and D है 4 pi q divided by 6 4 pi epsilon naught. Yes. The charge q is located. So हम यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाते हैं और उससे समझते हैं. ये क्यूब बना दिया मैंने. अब यहाँ पे एक चार्ज जो है, लेट अस से इसका साइड ए ले लो, एक हर एक साइड. तो अगर ये साइड ए है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू ए. तो यहाँ पे कहीं सेंटर पे जो है एक चार्ज क्यू रखा हुआ है. तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेज, थ्रू एनी फेज. तो अब इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा through this charge which is enclosed in this cube, which will be equal to q upon epsilon. ये तो हो गया. Now this flux will be passing through all the sides of the cube. इधर से भी जाएगा, इधर से भी पास होगा. ठीक है. So flux passing through any one phase क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. 6 क्यों है? बिकॉज एक क्यूब में कितने साइड्स होते हैं? 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, दो साइड्स में है, दो ये आपके दो साइड्स के हो गए, इधर दो हो गए. एंड so there are 6 faces in a cube. So the total flux which is passing through this cube is equal to q upon epsilon naught. So the flux passing through one phase will be equal to q upon 6 pi epsilon naught. Now यहाँ पे इन्होंने क्या किया आंसर में, थोड़ा सा इन्होंने बस हल्का सा आपको घुमा दिया है. इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 4 pi epsilon तो नॉट है, तो यहाँ पे मेरा epsilon naught आ गया है. तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, I will just write 4 pi in the numerator और यहाँ 6 कर दिया और यह हमने लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 एंड ऊपर हमारा हो जाएगा 4 पाई. तो मेरे का ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. द ओनली थिंग इज दैट दिस वाज द आंसर, बट व्हाट दे हैव डन इज दैट इन द ऑल्टरनेटिव दे हैव मल्टीप्लाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 4 पाई. तो जब 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा. सो द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इज डी. So today we have discussed in brief about the basic definition of electric flux. वो क्या होता है and what are the different formulas which govern the electric flux. कौन कौन से फॉर्मूले को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं. व्हाट इज गॉस लॉ क्या होता है. एंड वी हैव आल्सो ट्राइड टू सॉल्व 3 very simple questions on this topic. So in the next lecture, that is in lecture number 9, I will be taking 2 or 3
questions from this electric flux and a couple of questions from the topic of this electric field also. In the lecture number 9, the questions will be a little difficult than what we have done till now. Okay, so this is all for today's session, and thank you very much for joining in this lecture. I hope that you are understanding what I am trying to you are. I hope that you are able to understand what I am trying to teach here. And if you have any problems or if you have any questions also, you can directly contact me through my mobile number or through the email address also. So this is all for the today's session, and have a nice day. Bye.